हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15 बर्ड बाथ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट इसके हम करते हैं मीनिंग्स। फर्स्ट वन इज पूल। पूल इज अ स्मॉल एरिया विच होल्ड्स स्टिल वाटर। नेक्स्ट, पेबल्स, stones which are small, smooth and round. Now third one is flutter, hurried movement of wings. Next, splattering, it means splashing. Next, it's delight. Delight means joy. Next, lined, an outline of pebbles around the pool. Next, cluster, a small group. Next one is brink. Brink means edge. Next is flash, fly away with great speed. Rewrite the following lines in your own words. First one is, never one comes flying by, but will flutter down to drink. It means the poetess Evelyn Staines is sharing the sight in the garden on summer days. Not usual visitors, the robins visit the pool only in summer to quench its thirst and beat the heat. Next one is, till of the flesh, singing sweetly their delight. It means the robins stop by the pretty little pool to quench their thirst. Delighted the cool feeling, they splash the water with great delight. Having found relief from a very hot day, they suddenly take off to their next destination, singing sweet songs of delight and joy. Now next question, what can you do to welcome birds in your surroundings? What you can do? We should grow trees, grass and flower bearing plants to attract birds, water sources in gardens like fountains and ponds to make it bird friendly. We can place boxes with holes in the garden where the birds can come home to after a long time. Now last question, that is the fourth one, is write down the rhyming words from the poem. Made, made, laid, pool, cool, high, by, brink, drink, splash, flash, bright, delight। ओके बच्चों, इसके साथ में ही हमने लेसन नंबर 15 बर्ड बात क्वेश्चन आंसर है वो फिनिश कर ली। बहुत छोटी सी पोएम है ये, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन दी गई है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।